Okay. So the difficulty of collecting the required instances, ये सबसे पहला डिफ़िकल्टी है. हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है सेम इंस्टेंसेस को कलेक्ट करना. जैसे मलेरिया का मैंने एग्जांपल दिया. सो how many instances you can collect? This is very difficult to collect so many instances of people suffering from malaria. Then दूसरा द डिफ़िकल्टी ऑफ करेक्ट एनालिसिस. हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ऑफ द इंस्टेंसेस आर करेक्ट और नॉट, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज नॉट सर्टेन, इट इज़ प्रोबेबल, राइट. ये एक्सपेरिमेंट की तरह सर्टेन नहीं होता है, ये प्रोबेबल होता है. वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स, द सेम थिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट पीपल्स. दैट्स वाई द एनालिसिस इज करेक्ट और नॉट, ये मुझे हम लोगों को पता नहीं चलता. दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ एग्रीमेंट. थर्डली, द मेथड ऑफ एग्रीमेंट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉज एंड द को इफेक्ट. If two instances always go together, they are considered to be the cause and the effect. But मेथड ऑफ एग्रीमेंट को लगता है अगर दो इंस्टेंसेस हमेशा एक साथ चल रहा है, वन इज द एंटीसीडेंट एंड वन इज द कॉन्सिक्वेंट, दैट मीन्स दे आर द कॉज एंड द इफेक्ट. बट दिस इज नॉट ट्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल डे एंड नाइट. ओके, सो डे के बाद नाइट आता है, बट दैट डजंट मीन दैट डे इज द cause of the night. So method of agreement always thinks that if two things go together, then they are the cause and the effect, which is also a disadvantage of method of agreement. क्योंकि if two things are going together, it is not compulsory that one will be the cause of the other. Like मैंने जैसे example दिया day and night. Day is not the cause of the night, but they always go together. Now fourthly, the method of agreement cannot be suitably applied when the cause is complex. Let us explain this with an example. Let us suppose that a group of student goes to hill station. Okay, ये जो फोर्थ डिसएडवांटेज है, इसका मतलब है मेथड ऑफ एग्रीमेंट कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व नहीं कर सकता है और इजीली प्लूरलिटी ऑफ कॉजेस का प्रे बन जाता है. मीन्स बहुत सारे कॉजेज निकल आते हैं. जब हम लोग मेथड ऑफ एग्रीमेंट अप्लाई करेंगे बहुत सारे कॉजेज निकल आते हैं. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि एक इफेक्ट का एक ही कॉज हो सकता है, बहुत सारे कॉज नहीं हो सकते. सो मेथड ऑफ एग्रीमेंट फेल्स टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट और द करेक्ट कॉज. ओके, सो बहुत सारे कॉजेज निकाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, suppose a group of students went to a hill station for excursion or picnic or stay of a week. Okay, हिल स्टेशन से आने के बाद देखा गया है that the health of all the students have improved. Okay, now कैसे पता, अगर हम लोग मेथड ऑफ एग्रीमेंट यूज करें टू अंडरस्टैंड कि कैसे द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट इम्प्रूव्ड. ओके, then it's a complex case. Okay, कैसे complex case? Better health is due to complex causes which include better climate, rest and relaxation, okay, recreation, cheerful company, etc. ये सारे चीज मिला के the students have improved their health, right? So इसमें से हम लोग एक cause कैसे निकालेंगे? इसमें तो बहुत सारे कॉजेस है फॉर अ बेटर हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट. ओके, दे आर रिलैक्स्ड आउट देयर, दे हैड गुड फूड, दे हैव बेटर एनवायरनमेंट, दे हैव फ्रेश एयर, दे हैव गुड कंपनी एंड वो सब मिला के their health has been improved. So in such kind of complex cases, method of agreement cannot be used. Okay, clear? So these are some of the disadvantages, but to make the disadvantages more clear, मैं आप लोगों को एक example देना चाहूँगी. This is the example. Suppose a person, an alcoholic person. Alcoholic आप लोगों को पता है ना? The person who drink very much. Okay, he drink very much. So that is called an alcoholic person. Suppose an alcoholic person, उनका से बहुत health खराब हो रहा है, then he will go to the doctor definitely. Okay. Now, after going to the doctor said that due to more consumption of alcohol, your health is becoming weak day by day. You are suffering from many diseases because you are consuming more alcohol.
Now he is an alcoholic person, right? He will not agree with it because he is addicted to alcohol. So he used method of agreement, suppose, to find out whether alcohol is the cause of his poor health or not. So in the first day, what he did, he drank whiskey, okay, with soda, which was followed by broken health. In the second day, he drank brandy with soda, which was followed by a broken health. And in the third day, he again drank rum with soda, which was followed by broken health. So these are the different brands of alcohol, that is whiskey, brandy, rum. Okay, so they are that the alcoholic person, he drink different types of alcohol with soda different days to find out whether alcohol is the cause of his broken health. But इस example में what is common? Is whiskey common? No. Brandy common? No. Rum common? No. The common thing is soda. In every day he is mixing soda with alcohol, and from this soda is all the instances agreeing in soda. Then from this he concluded that soda is the cause of his broken health and it is not alcohol. So यहाँ पे जो मेथड ऑफ एग्रीमेंट है, उसने मेथड ऑफ एग्रीमेंट अप्लाई किया, बट द मेथड ऑफ एग्रीमेंट इज misleading him, right? It is not soda. We all know that it is due to alcohol. He has a broken health. He has a poor health. But by applying method of agreement, he find out that soda is the cause of his broken health. So here, it is frustrated by plurality of causes. Okay, and the method of agreement is misleading that person. That's why there are many disadvantages of method of agreement. Though there are many advantages, but there are many disadvantages also. So I hope आप लोगों को method of agreement समझ में आया होगा. अगर कोई confusion है, then you let me know. I'll explain again.